मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू एंड आई होप यू आर फाइन। तो क्लास हम यहाँ पे आए हुए हैं इस पैरे पे 2 days लेटर, ठीक है। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was upon the end of the bathtub and fumbling at the aquarium taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with the irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. अब इसमें क्या कहा गया कि 2 दिन के बाद जो मिजबिल है ना, वो ऑथर के कमरे से निकल जाता है और बाथरूम में पहुंच जाता है, और जल्दी जल्दी वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, उसको जो वहाँ पर एक टैप लगा होता है उस टैप को वो चला देता है। शुरू शुरू में तो कम पानी आता है उस टैप में से, फिर बाद में बहुत सारा पानी आने लगता है, ठीक है। और कभी कभार तो इतनी टाइट कर देता था कि उसको खोलना मुश्किल हो जाता था। Very soon, Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. But he spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball. And he could also draw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. Marbles and were Mid's favorite toys, and for the pastime he would lie on the back, rolling 2 or more of them up and down his wide and flat belly, and without ever dropping one to the floor. अब क्या है कि इसमें ये बताया गया कि अब जो मिज है ना, अब वो खिलौने से खेलने लगा था। उसके पास रबड़ के खिलौने थे, लेकिन उसका जो मेन खिलौना था जो सब अच्छा लगता था उसको, ये मार्बल्स यानी कंचे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the project of transporting me to England to Chelmsford. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline, and from there to London. The airline insisted that the meat should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour later, before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. अब क्या होता है कि जो बसरा से ना वो इंग्लैंड जाने वाले होते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड की जो फ़्लाइट होती है, जो ब्रिटिश एयरलाइन है, वो जानवरों को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो क्या करता है कि ऑथर है ना, पहले पेरिस की जो फ़्लाइट है फ्रांस की, उसको बुक करता है, वहाँ से फिर वो इंग्लैंड जा सकता है, ठीक है। तो फिर वो वहाँ से, और वो जो पेरिस है, जो फ्रांस एयरलाइन है, वो ये कहते हैं कि उसको बताते हैं कि जो भाई डब्बा है जिसमें मीज को रखा जाना है, उदबिलाव को रखा जाना है, वो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। और वो डिब्बा बनवा के और वो वहाँ से वो चला जाता है लंच करने के लिए, ठीक है, और मिज को उसमें रख देता है। So when I returned, there was an appalling spectacle. That was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg, and he had torn the lining of the box to shreds. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put miserable Miz back into the box, holding down the lid with my hand. अब क्या होता है कि जैसे कि खाना खाकर वापस आता है कि तो उसको एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सीन का सामना करना पड़ता है कि जिस बॉक्स में ऑथर ने मीज़ को रखा था, वो उसमें से खून निकल रहा है, और जो मीज़ है बेचारा वो रो रहा है, ठीक है। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was
waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, so rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knees, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. अब क्या होता है कि वो उसको एयरप्लेन में ले जाता है। जब उसको ले जा रहा होता है ना, तो वहाँ पर ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो बहुत गुस्से से उसको ऑथर को प्लेन में ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले लेट होने वाला था। और ठीक है, और वो जो वहाँ पर एयर होस्टेस होती है वो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है कि क्या वह वो जो फ़िश होती है, फ़िश थी उसके पास, फ़िश रखने का एक डब्बा था, ठीक है, उसमें फ़िश थी, और उसने कहा कि इसको एक ठंडी जगह पर रख दो, तो उसने ऐसा ही किया, और उस पर बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करने वाला था, बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करने का मन किया ऑथर का, लेकिन उसने रहने दिया। वो उसने कहा कि जो एयर होस्टेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।